Hello bachcho, let's see the question. So the question says which is not correct. So पहला option है herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimens. Second option है botanical gardens have collection of living plants for reference. Third option है museum has collection of photographs of plants and animals. And fourth option है key is taxonomic aid for identification of specimens. सो इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जो करेक्ट नहीं है. सो देयरफॉर द की कॉन्सेप्ट in this question is to first understand what are taxonomic aids. So first of all, taxonomic aids are actually a collection of samples or preserved specimens जो हम यूज करते हैं for research as well as for identification of organisms. So इसे हम कहते हैं taxonomic aids. तो अब कुछ कॉमन taxonomic aids कुछ इस तरह है. जैसे first one is herbarium. So herbarium is a taxonomic aid because herbarium में we have dried and pressed preserved plant specimens only. So herbarium एक ऐसा process है जो हम use करते हैं to preserve plant specimens by drying and pressing them. तो on a herbarium sheet. तो इस तरह से हम plant specimens को preserve करके रख सकते हैं और उन्हें classify करके उनकी identification हम रख सकते हैं so that हम उसे बाद में for future use and study and research में हम use कर सके. अब जो second option है वो है botanical gardens. तो again botanical garden is also a taxonomic aid and this is a form of ex situ conservation which has plant live plants living in an environment which is different from their natural habitat, but there they are protected from getting endangered or getting extinct. So botanical gardens में भी हम ऐसे plant specimens को रखते हैं और उनको ग्रो करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. सो बेसिकली बोटानिकल गार्डन्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस. फिर आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन में, that is museums. So museums on the other hand can serve as a place where you keep specimens, so preserved specimens of both plants and animals or photographs of both plants and animals. So museum में हर kind of preserved specimens रखा जाता है so as people can look into them and study them, and based on research and identification of organisms we can do it by the specimens which are kept in the museums. Next है the fourth option, that is key. So key is also a very important taxonomic aid and this is used for the identification of an organism, be it plants or animals. सो की के मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ टेक्सोनोमिकल हायरार्की. तो इसे हम बोलते हैं की. तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें, सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड pressed and preserved plant specimens. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज इसमें बताया गया है कि किस तरह से हर्बेरियम में हम ड्राइड प्रेस्ड एंड प्लांट स्पेसिमेंस रखते हैं. तो ये करेक्ट आंसर है. सेकंड है बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट
for reference. तो ये भी correct statement है because we saw that botanical gardens are ex-situ conservation for plants जहाँ पे हम living plant specimens को रखते हैं for reference. फिर third है museum has collection of photographs of plants and animals. So ये statement incorrect हो गया because म्यूजियम सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं बट प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस भी रखते हैं फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. And the fourth option is key is taxonomic aid for identification of specimens. So ये statement भी correct है. So therefore the correct answer for the given question is option number C because this statement is not correct. Therefore the final answer for the given question is option number C, that is museum are a collection of photographs of plants and animals. So ये हो गया हमारा final answer. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.